and experience head to toe changes within is presence of Param Brahma. Means it is presence of power, knowledge, peace, bliss, immortality. When you practice sincerely, a time will come that you will realize, I'm not able to breathe. Air is not going inside. Very difficult in breathing. This is not true. You are not accepting head to toes. Therefore, breathing rate is not attaining its ultimate point of the present state of existence. Moment you feel head to toes, love everything, will find. You will have appropriate expansion of thoracic area and contraction automatically will be done. Sometimes people just ask me, I'm feeling very difficulty, what? I'm not able to breathe. What happening? No air is going inside. What happens? You see, nothing is going inside. I'm feeling restless. No, this is not true. Try to observe, you are not experiencing your presence. You are not welcoming your presence. You are not accepting your presence. It's presence of Param Brahma, power, knowledge, peace and bliss. Therefore you have this illusion of suffocation. But I have experienced this many times. Sometimes I feel no air cannot go inside. But go to the ultimate point, then what you will realize, as Paramahansa Yogananda explained, as breath is sucked out. When you make this surgery, our breathing system, breathing activity is stopped. Like breath is sucked out. When he was in Dakshineshwar, Kali temple, happened the same thing. It happened same thing when he was dreaming that he is captain, he is dead, or he is meditating at Galpar Road alive. Try to understand this. Moment to practice, slowly, you reach. As you are going up and up, you will find everything is changing. But you stop experiencing loving head to toes, then change stops, changing process stops. Then you feel suffocation. You got the point? Therefore it is said, as Paramahansa Yogananda, he was realized master before meeting Ikteshwagiri. Two penniless boys before meeting Ikteshwagiri. When he recognized he is my master, that is not easy things. Ikteshwagiri recognized him, he also recognized him. Before that, the amulet, what he was having. Before that, so many things happens in his life. Because he was in the state of highest realized state. Still, Swami Ikteshwagiri had to change his many dimensions of ego. Therefore, little things he was correcting. At the last, he reached to the height. When he was a Regent Bombay Hotel, while returning to USA, he felt again breath is sucked out. And he saw Ikteshwagiri is there. Therefore, if you have this problem, then it is very difficult to breathe in. In that, try to realize you are not experiencing head to toes various changes within as presence of all power, knowledge, peace, bliss, immortality and God. Moment you practice, you will realize now breathing is started. अच्छी तरह से याद रखिए, कभी कभी होता है कि हम सफोकेशन फील करते हैं कि श्वास नहीं जा रही है, बहुत सफोकेशन फील करते हैं. लोग हमसे शिकायत करते हैं श्वास अंदर जा ही नहीं रही है. ऐसा नहीं है. कितनी बार हमें हजारों बार होता है कि श्वास नहीं जा रही है. तो हमने देखा गलती क्या हो रही है. श्वास नहीं जा रही अंदर, गलती कहाँ हो रही है. गलती इसी में हो रही थी
कि सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता कम थी। भ्रूमध्य कहाँ है, भूल गए देखना। श्वास नाक में प्रवाहित होती, भूल गए। सिर से पैर की उंगली तक प्रत्येक अंगों की अनुभूति भूल गए। जो अनुभव हो रहा भूल गए। इसको स्वीकार करने के तो साक्षात परब्रह्म का साकार रूप है। भूल गए, इसी को स्वीकार करने के ही परम तत्व है, यही परम शांति है, यही परम आनंद है, यही संपूर्ण ज्ञान है, यही भूल गए। इसलिए सफोकेशन लगने लगा। इसको याद रखिएगा, ये स्टेज बहुत जल्दी आती है सफोकेशन वाली, तो उसमें तुरंत आप अभ्यास करिए। इसी व्हाट परमहंस योगानंद said, the little things. If the Giri was hunting him, and what he said, I have decided to stay, not to leave it. I am going to accept his all scolding. Then what he was realizing, with this scolding, when Yogananda accepted willingly, he experienced transformation. When he decided to accept all advice of Yukteswar Giri perfectly, he entered into highest stage of self-realization, that is cosmic consciousness. What he realized, breath is gone, body became no weight, feeling no mass, no volume. Here's the one chapter, you can read that. Therefore, this textbook will help you a lot. Chapter 14, An Experience in Cosmic Consciousness. Chapter 14. You are going to experience this. Before that it will happen, what I am explaining. Every day it happens with me. I am not able to breathe. Okay, all right, it's very good condition. That I concentrate, so nice expansion starts. After experiencing few times, the sleep disappears. Then I can remain awake till I want. ऐसे कितनी बार हमको होता, अभी भी पता चला श्वास ही नहीं अंदर जा रही है, याद आया करे नहीं, हमारे अभ्यास में कमी है। जहाँ अभ्यास के ट्रू आइडिया, ट्रू थॉट, ट्रू कॉन्सेप्ट में आए हैं, अभ्यास की अनुभूतियों को जैसे स्वीकार किए, तो सद्भावना, सद्विचार, सच्ची धारणा, उस समय तुरंत पता चला, अरे बड़ा आनंद आ गया, खूब अच्छी तरह श्वास चलने लगी। ऐसे बने रही थोड़ी देर, पता चला नींद की आवश्यकता ही खत्म हो गई। तो जब तक चाहिए तब तक जगिए। ये सब आपको हम बता रहे हैं, जिससे छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो ना हो। भारत में बहुत ही लड़ाइयाँ होती है जातिवाद पर, कि शूद्र हैं। शूद्र कहा जाता है सर्वेंट क्लास। सर्वेंट क्लास क्या है? छोटे बच्चे के लिए सर्वेंट क्लास माँ है। माँ सारी सर्विस करती बच्चे की, यूरिन साफ करना, स्टूल साफ करना, दूध पिलाना, मालिश करना, सुलाना,
रात भर जगना है क्या है? ये सर्वेंट क्लास का ही तो काम है। तो जब तक आप अपने को माँ के रूप में प्रकट नहीं करेंगे तब तक जातिवाद का भ्रम ये खत्म नहीं होगा भारत से। In India, you know, there is a very big fight in the name of casteism. As in USA, there is a big fight in the name of black and white. Now it is not. It is very reduced, almost minimum. Before it was. In India, the caste feeling is much more. What we call Shudra. Okay, all right. Shudra means servant class. What is written in Holy Science? I am explaining that, so that you should not have any problem. Mood, ignorant stage of the heart. A person like that we call Shudra or servant class. Page number 77, Sutra 24. I am expanding its meaning, Shudra class. Shudra class means servant class. Generally, servant class means, oh, give me water, give me food, wash my dishes, try to arrange my bed, massage. All this is called the activity of servant class. Who is doing this most efficiently? Mother. Newborn baby is there. Mother is cleaning all urine and stool, and mother is massaging child, giving the milk, doing all service, awake in the night. If child is crying, mother is awake, helping child. This is called the highest servant class. According to the intuitive message, all persons should practice to become mother. When you practice to become mother, then this all kind of illness, sickness will disappear. That we are Shudra or servant class. All should work as servant class. My mother, your mother, everybody's mother, they looked after baby. When the mother is working as servant class. Therefore, Paramahansa Yogananda said very clearly, try to follow Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, Bapu, my mother. If I do not think mother means female, each and every person should work as mother. That is very important. This is very, very important. And I request all of you, do this and practice this sincerely. When I am taking class, you know what is happening to me? My hair is rotating from inside. How I feel, you can't imagine. Sometimes mustache hair rotates, sometimes hair rotates. And if anybody will rotate, they will go and they will shave the whole head. But I am not doing it. Why it is happening? Because life force becomes very active at the root of hair. The hair has to move. अभी आप सामने बैठे हैं, हमारे सिर के बाल का हेयर का एक एक जड़ हिलना शुरू कर रही है. अंदर भी हिल रही है, ऊपर भी हिल रही है. ये मूंछ है, दाढ़ी है, ये सब हिलना शुरू किए. और किसी को होगा तो जाके सिर छिलवा लेगा, कह देगा हाँ भाई बड़ा अच्छा है, सिर छिलवा लिए, समस्या गई. या दाढ़ी सेव कर लेगा. ये चीज समझ में आ रही है? जब सिर से पैर की उंगली तक इसकी उपस्थिति अनुभूति को स्वीकार करेंगे कि परब्रह्म की उपस्थिति है, तब याद रखिए बहुत अच्छे तरीके से आपकी एक एक मसल्स, एक एक स्किन, एक एक पोर, एक एक पॉइंट ये वाइब्रेट करेगा. तो वाइब्रेट की इंटेंसिटी जब बढ़ेगी, लगेगा चींटी काट रही है, लगेगा पिन की तरह कुछ चुभ रहा है. फिर आप भ्रूमध्य पर एकाग्र हो जाइए, शरीर का अनुभव करिए, अपने में एकाग्र हो जाइए, तो खत्म हो जाता है चुभन.
you will experience, I have been experiencing, I experienced many times, that when you have deeper concentration within, what you realize each and every point, there is just movement of the life force in such a way, you feel just like some needle is pinching. Everywhere you feel something like 1,000 needles are being pinched. How you will feel it? Then we can't tolerate. Immediately concentrate on Bhumad. Look in the space front of forehead. Feel head and spine. Feel head to toes. Accept all changes. Presence of power, knowledge, peace, bliss, immortality. Whatever we are experiencing, perception of pinching needle, it stops. You got the point? This is the important things. What I want to know, what I want to explain you, what I have realized it. When you meditate more and more, if some bones, some part of bone, some part of cartilage, some part of arteries, veins, anywhere, is not in active mode, when they become active mode, you will feel such different that you will not like it, because you have never experienced before. But if you remember all the time, Parabram is all in all, Parabram alone exists, then how to accept it? Very easy. Increase intensity of concentration on Bhumad, in the space in front of forehead. Observe the breath. Feel head and spine. Feel head to toes. Remember the true idea, true thought, true concept behind everything we feel. That accept it is presence of Param Brahma, presence of power, knowledge, peace, bliss. Then you will realize all sensation in the bone, what you feel, in the cartilage, in the ligament, in the tendon, you will find their presence is presence of bliss, joy. ऐसा होगा है, कभी कभी होगा ऐसे. आपकी हड्डियां हैं, कार्टिलेज है, मांसपेशियां है, लिगमेंट है, टेंडन्स है, ये सारी चीजें जो भी है, इसमें अनेक ऐसे चेंजेस होंगे कि आप सह नहीं पाएंगे. तो आप वहां पर देखिए, हम अपने सच्ची भावना से अलग हो गए होंगे. सच्ची भावना, सच्ची धारणा, सद्विचार से हम अलग हो गए होंगे. आयु से जुड़ जाइए. मन को भ्रमंध्य पर लाइए, सामने देखते रहिए, जो दिखाई पड़ता है ये, और श्वास, सिर और रीढ़, सिर से पैर कमर तक सारे परिवर्तन, ये सब परम शांति तत्व है. यही सर्वज्ञ तत्व है, यही सर्वशक्तिमान है, यही परब्रह्म की उपस्थिति है. जैसे अभ्यास करेंगे, जो चेंजेस हड्डियों में, कार्टिलेज में, लिगामेंट टेंडन में हो रहा था, सह नहीं पा रहे थे, और लगेगा को तो आनंद की अनुभूति. इस तरह से आगे बढ़ते आगे बढ़ते हमारा हृदय जो अंधकार में है, मूढ़, आलस्य से भरा है, उसमें गतिशीलता आ जाती है. फिर जो गतिशीलता, तो गतिशीलता बनी रहेगी, फिर आलस नहीं आएगा. फिर गतिशीलता इतनी अच्छी बनी रहेगी, हमें इतनी पावर आ जाएगी कि हम एकाग्र होने लगेंगे. फिर एकाग्रता की इतनी क्षमता आ जाएगी कि ब्रह्मांड की सभी रचनाओं में एकाग्र हो जाएंगे. उसी स्टेज को कहते हैं चित्त वृत्ति निरुद्ध. निरोध का मतलब ये नहीं होता कोई चीज बंद करना. इसकी व्याख्या हमें कई बार बताया, फिर बताएंगे. यही होता है. What you feel when you practice head to toes, whatever you feel, so many changes you will feel. But when you have darkness, wisdom is having darkness, mind is dark,
heart is dark, then we are confused. Practice Kriyayoga, practice oneness with the true idea, true thought, true concept behind everything we feel, that is presence of Parabrahma. And what we will realize, now our consciousness will move from ignorant, from darkness to propelled state. Propelled means it will have activity. Laziness will go. And this activity will keep on increasing activity. We will be stable in this activity. After that, what will happen? That we will have full concentration wherever we want. Then find the truth hidden anywhere. If I put 100% concentration on that, like in the arm, then you will realize how to create arm, how to protect it, how to make a change in this. And when concentration increases, it expands and reaches up to the all creation, that is called Niruddha stage, clean heart. The heart becomes clean. That is what we want. That is what you read in this holy science. The heart is dark, then propelled, then steady, then devoted and clean. Inside, we have intuition which is dormant, in sleeping mode. In Mahabharata, Draupadi represents intuition. Draupadi represents intuition. And Draupadi was awake. Then she felt oneness with the Krishna consciousness. Then she experienced perfect protection. अच्छी तरह से याद रखिए, अपने अंदर जिसको हम अंतर्ज्ञान कहते हैं, जिसको विवेक कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, वो सो रही है, बरीड है, वो सुसुप्त है। वो ऐसे महाभारत में द्रौपदी को दिखाया गया है। जब तक द्रौपदी सक्रिय नहीं थी, एक्टिव नहीं थी, सब समस्या थी। फिर द्रौपदी जब एक्टिव हो गई तो कृष्ण के साथ हो गई, सारी समस्या खत्म हो गई। तो द्रौपदी की समस्या कैसे खत्म हुई, हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। Then I will explain you in Mahabharata how Draupadi became one with the Krishna, means Vishnu, means Ishwar, means the all protecting power. I am going to show a video of Mahabharata, then I will explain it. Until our wisdom is not connected with the consciousness of Parabrahma, we cannot understand this episode. जब तक हमारी बुद्धि परब्रह्म के साथ संयुक्त नहीं होगी, हम इस एपिसोड को समझ नहीं सकते। जैसे एक एग्जाम्पल है, कहीं पर एक रेस्टोरेंट है, कहीं कुछ खाने पीने का कोई होटल है, उसका खाना पीना बहुत ही पसंद है, सुबह से शाम तक वो याद आता है, लेकिन अभी जाने की स्थिति में नहीं है, बुखार भी है, जुकाम भी है, पैर में तकलीफ भी है, चल नहीं पा रहे हैं। तो इसके अंदर जो लाइफ फोर्स है, जिस शक्ति से पैर बना है, जिस शक्ति से चल रहा है, अपना मन उसको फोर्स करता है। जो हमारी लाइफ फोर्स पैर को फोर्स करके लंगड़े लंगड़े ही जाओ लेकिन चलो,
हमको खाना है। हुआ क्या, जब चलेंगे तो टाइटनेस के बिना चल नहीं सकते, पैरों को टाइट करना पड़ेगा। जो टाइटनेस है ये अपने अंदर का दुर्योधन है। हम आपको बताएंगे इसके बारे में, अभी इतना ही सुन लीजिए। चलते ही जो टाइटनेस हुई या हाथों में चोट लगी है, हाथों से खा नहीं पाएंगे, इस चोट को हमने दरकिनार किया, दर्द को सहते मुंह में डाला और जो बहुत पसंद की चीज़ खाया, तो हाथ को भी हमें टाइट करना पड़ा। तो जो टाइटनेस है, जो हमने प्रकट किया, कड़ापन, यही अपने अंदर का दुशासन है। दुशासन, दुर्योधन कहते हैं काम तत्व को। काम तत्व क्या है? स्वाद की अनुभूति काम तत्व है। हमें ये चीज स्वाद चाहिए, बहुत ही दिमाग उसी पर लगा है, तो काम तत्व ने, स्वाद की स्मृति ने हमें चला दिया। और चलने में कौन मदद किया? इसके अंदर जो लाइफ फोर्स था, वही लाइफ फोर्स द्रौपदी है, उससे मदद किया। और जो तकलीफ है, तकलीफ कारण क्या है? कि लाइफ फोर्स को हमने मिसयूज किया। पैरों में तकलीफ थी, हाथ में तकलीफ थी, सिर में दर्द था, बुखार भी था, लेकिन हम किसी तरह से लंगड़ाते हुए गए और खाए। तो पता चला कि जो बीमारी है गलत खाने की वजह से है, लेकिन क्या कहा गया? नहीं, ये जेनेटिक है। हमारे पिता को भी था, माँ को भी था, बाबा को भी था, आजी और दादी को भी था। तो जेनेटिक है, खाने से नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे अगर पिता अंधे हैं तो हम भी अंधे हुए। तो द्रौपदी ने गलती किया था, अंधे के पुत्र अंधा। दुर्योधन को अंधा कहा चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। इसी गलती के कारण इतना बड़ा ये बखेड़ा शुरू हो गया। तो जो हम कहते हैं कि डायबिटीज है, जेनेटिक है, ब्लड प्रेशर है, जेनेटिक है, आर्थराइटिस है, जेनेटिक है। जेनेटिक बीमारी अगर है, हर जगह तो परब्रह्म में है, तो उनका जीन्स क्यों नहीं आया? हम आदम और ईव से हुए हैं, तो जेनेटिक में आदम की शक्ति क्यों नहीं आई? परब्रह्म में पूरे ब्रह्मांड में सभी रचनाओं के रूप में है, तो परब्रह्म का जेनेटिक कैरेक्टर क्यों नहीं आया? एक जो परंपरा चली, हम बीमार हैं खाने की वजह से नहीं, गलत जो कर्म हो जाता है उसकी वजह से नहीं, ये तो जेनेटिक है। वही द्रौपदी ने कहा कि अंधे के पुत्र अंधे हैं। जिनको हिंदी आती उनको तो समझ में आ गया होगा, फिर इसको समझाएंगे हम द्रौपदी ने क्या गलती किया था। What I want to explain, Draupadi represents life force within. Ocean of life force is brain and spinal cord. And this life force is manifesting the form of this structure head to toes. The nature of life force is also to protect head to toes. But when we remember lust, for example, if we have great lust for sweet, something, some taste, we remember all the time. If I go to that restaurant, I go to that hotel, I go to my friend's home, there I feel something good, tasty food. If I remember that tasty food day and night, then one day I will force to my leg to go there. But leg is having arthritis, still I will force, leg has to go. All right. But my hand is injured. I cannot eat with the hand. But my lust consciousness, mind will force hand, okay, you have to eat. I will tolerate my pain in the hand. I will tolerate my pain in the leg. I will go from here to there. I will satisfy the hunger of lust. I will satisfy desire of the lust. I will take food. I became more sick. No, it is not the food. It is genetic character. My father was having the same sickness. My mother was having. My grandfather, grandmother. This is genetic. There is no problem in the food. Food is all right. I am sick because of genetic character.
Okay, then let us think. Parabram is manifested in the form of my and your presence. What is his genetic character? Immortality, peace, joy, power, knowledge. This is the genetic character of Parabram. Why that genetic character is not working? Why I say? Because my father was having diabetes, blood pressure, heart problem, therefore I got. My mother was having heart problem, diabetes, arthritis, therefore I got. My grandfather, grandmother, from my mother's side, grandfather, grandmother, all a group of people in my family were having this problem, therefore I got. This is not true. If you think like that, then you will be damaged. Let us today, from today we must realize within my head to toes, who exists Parabram. What is his genetic character? He is immortal. He represents eternal peace. He represents bliss. He represents omnipotent power, omniscient consciousness. Therefore, let us believe this. What I feel is presence of Parabram, power, knowledge, peace, bliss, immortality. Then we will not have this false concept that I am sick because of genetic character. Medical science never claimed that medical science achieved to ultimate truth. Never claimed. Search is going on. Every year new research. कोई मेडिकल साइंस ये क्लेम नहीं करता है कि हम जो कह रहे हैं अंतिम सत्य है, उसमें खोज जारी है। आज आप लोग जान लीजिए, अगर हम बीमार हैं तो अपने कर्मों से हैं। जिस कर्म से बीमार है उस कर्म को करना बंद कर दीजिए। टुडे वी शुड नो इफ आई एम सिक बिकॉज ऑफ माई ओन कर्मा, वी हैव पावर to stop that karma. You will be okay. Yesterday somebody got temperature around 102. In 2 hours temperature gone away. With visualizing ABC, temperature gone away. Name is Anu, who is sitting here. Where is Anu? Where you are? Kosi is there. In 2 hours temperature is gone. But when we get temperature, we get paracetamol, we get this, we get antibiotics. Oh, you have temperature, it is genetic. My father was having temperature. My mother was having temperature. My grandfather, grandmother, my mother's side, grandfather, grandmother. Therefore I got temperature. No. Why I got temperature? Listen. I do not like cold. I am feeling very cold. Okay, then you want warmness. Okay, we'll get temperature. I inquired, in daytime what you are feeling very cold, oh, therefore you got temperature. You wanted temperature, temperature came. और आपने कहा कि अरे ये जाड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो टेम्परेचर आएगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर की डिमांड किया, बुखार आएगा. Therefore try to remember this, because of our habit, different habit we have developed, because of that we become sick. We have stress. This is first thing I want. Now going to be your supper time. After that 45 minutes walking, then I will have 1 hour class. Then I will explain this, then we will go. We are going to have Aarti session. Tell me if I will explain so much, you will not understand. Who is doing mistake? Life force here. When life force is awakened, enlightened, my mind will say, go here. I will say, no, I will not go there. But remember, life force has become head to toes. Life force will obey head to toes demand. Life force will obey demand of blind mind and wisdom. Therefore, this is said technically, life force is called Patni, is called wife, is called mother. And this Patni, wife, has become head to toes. Head to toe is called Pati, husband. Life force has to serve husband. How it will serve? Life force tuned with the God. How it will tune with the God? What I feel, head to toes, various changes. Accept it in presence of God. Your life is connected to the God.
then this body will be protected. Then this pati, husband, will be safe, will be in safe mode. A little more technical, I will explain more. It's not technical. In India we say, the wife has to serve husband. They don't know what is the meaning of wife. Wife means power. What is power inside? Life force. The life force has become head to toes. Life force to serve, otherwise head to toes will not exist. But they have named that female are wife. No, they are not wife. They are presence of God. When you accept they are wife, okay, all right, then he is husband. The wife has to serve husband. No, both are presence of God. Both have to serve each other. This is a little message for today. Now let us have the arti. From how many years I explained this? Oh, Zoom का session है. Okay. Well, 8:30. Oh, 8:30 Zoom. They want to see you. Okay. They want to see all of you. You can open your cell phone, connect with the Zoom wherever you are. Okay. Let us. जल तत्व ही विनम्र तत्व है, जल तत्व ही विनम्र तत्व है। इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है, इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है। जल तत्व ही विनम्र तत्व है, जल तत्व ही विनम्र तत्व है। इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है, इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है। हम विनम्र रहे, हम विनम्र रहे और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे। हम विनम्र रहे और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे। यही गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है। यही मोरी मार्ग है, यही तोरी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है, यही तोरी मार्ग है। हम विनम्र रहे, हम विनम्र रहे और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे। हम विनम्र रहे और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे। यही गांधी मार्ग है, यही गांधीवाद है, यही गांधी मार्ग है, यही गांधीवाद है। यही मोरी मार्ग है, यही तोरी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है, यही तोरी मार्ग है। There is going to be 7. I request all of you complete food and walking up to 8. And I will explain the science of real interpretation, science of wisdom, science of mind, how to remove this difference between husband and wife. That wife should serve husband all the time. This is the law, especially in India. And husband, oh, all right, you are my wife, you have to serve me. I am going to explain this. From today onwards, all persons who are in India,
If they listen, they have to accept it, otherwise you will be sick. Yeah, they are sick because of this. इस भारत में एक परंपरा है, पत्नी पति की सेवा करे, ठीक है, ये परंपरा सही नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करें। अगर हमारा सुन करके समझ नहीं आएगा तो इसका मतलब आप अपने अंदर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि आपको बीमारी होगी, तनाव तकलीफ होगी। इस सफर के बाद उसको बताएंगे, फिर जूम सेशन होगा 8:30 पर। जूम सेशन में सब सेल फोन लेकर के कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको लोग देखना चाहते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, come yourself and connect yourself because they want to see your presence. Okay. Now supper is inviting to be uplifted.